Well, that wasn't the best start, but at least we made it. और अब आके चेरीज और पिज़्ज़ा मिलने हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ. The next day, the team is all here, and we're on our way to Shimshal, where the real journey begins. Across the Hunza River और पसुकोन्स के बिल्कुल साए में. This is where the road to Shimshal starts. अक्सर फेरी मेडोज की रोड को सबसे ख़तरनाक समझा जाता है, but Shimshal gives it good competition. The rock here is all loose, and landslides are a constant risk, especially in this season. But Yusuf Bhai doesn't seem to mind. This is Malangoti Glacier. I had my first ice climbing course here, and I got to learn from some of the best mountaineers in Pakistan. You can see bits of it here. Oh, that was a long day, but we're finally in Shimshal. अब कुछ खा पी के आराम करेंगे, but we're still excited for tomorrow. है ना सादिया मकबूल? आज हम अपने ट्रैक से पहले गांव में ही एक वार्म अप हाइक करेंगे. So let me tell you a bit about Shimshal, the Valley of Mountaineers. 3,100 मीटर की बुलंदी पे शिमशाल पाकिस्तान की सबसे ऊंची आबादियों में से है. And before the road was finished in 2003, the locals had to walk for 3 days through the river gorge on dangerous trails to reach the Karakoram highway. यहाँ के मौसम की वजह से इस इलाके में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है. Winters are really harsh, and the summer brings landslides and flooding. और इस सब के साथ आम सहूलियात की कमी के बायस यहाँ आम कारोबार ना होने के बराबर है. But the Shimshalis are a resilient people, and there are mountains all around. और इन पहाड़ों ने पाकिस्तान के चंद सबसे तगड़े माउंटेनियर्स को जन्म दिया. Shimshalis are often compared to the Sherpas of Nepal for their sheer ability and toughness on the big mountains. Qudrat Ali, Shaheen Beg, Abdul Joshi and Samina Beg are just some of the incredible mountaineers that have come from Shimshal. And now, there's a whole new generation of athletes taking on new challenges. Today the trek starts. मौसम भी अच्छा है, लेकिन पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं. The village is starting to wake up as we're leaving. Of course, हमेशा शुरू में पानी पे से ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है. जहाँ मैं गिरूंगा तो मर जाऊंगा. But at least the next one is safer. कुछ देखा देखा सा लग रहा है. Oh well.
bridge. Maybe I'm getting better at this. अब इस ट्रैक का सबसे बंजर हिस्सा शुरू होने वाला है. This is our last water source for the next few hours. The hike up is pretty steep. More than 650 meters of elevation gain in one day. Finally ठंडे पानी का चश्मा. Even these guys are loving it. क्या हाल है दोस्त? कुछ थके हुए लग रहे हो. Welcome to Minglik Sar, our first campsite. The only time I'm actually useful. Day 2 of the trek. Bags pack करो, नाश्ता करो, and it's time to head out. लेकिन पहले दुश्मन टीम के इलाके में से गुजरना होगा. Today is a difficult day. आज के रास्ते में almost कोई भी आसान हिस्सा नहीं आएगा. The trail is either too thin or too steep. The ground just rolls under your foot. जगह जगह rockfall का रिस्क है और अक्सर जगह पे ट्रेल ही नहीं है. Be extra careful. And maybe don't do this trek in your sneakers like I did. अजीज भाई, आपकी टीम स्लो जा रही है. Aziz Bhai is from a family of mountaineers and skiers. He is one of our guides on this trek. हमने इनके सब्र का बहुत इम्तिहान लिया. The man is always positive. आगे एक खतरनाक लैंडस्लाइड वाला सेक्शन है जिस पे ट्रेल ना होने के बराबर है. Thankfully we have Nadeema with us. She's a solid mountain guide. I just have to keep watch for her ताकि अगर ऊपर से कोई पत्थर आए तो मैं बता दूं. एक एक करके she'll get everyone across. People have unfortunately had horrible accidents on these sections. मैं देख रहा हूँ. सही है. अब जब सब गुजर चुके हैं तो नदीमा रास्ते में थोड़ा सा पाँव रखने की जगह बनाएगी ताकि पीछे से आने वालों के लिए रास्ता आसान हो. सही है. नहीं, मटी उड़ रही है लेफ्ट से. आ जाओ. It might not look like much, लेकिन इस जगह पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए.
ये है उच फुर्जी। We're supposed to have a lunch break here, लेकिन इधर पानी नहीं है इस वक्त। लगता है मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। मदद भाई, वक्ती भाई और जाफर. These guys are our main kitchen team, possibly the most important people in an expedition. They have to get up before everyone to prepare, carry extra weight on the trail, and eat and sleep after everyone at night. लेकिन इन्हीं की मेहनत की वजह से सबका वक्त अच्छा गुजरता है. And on top of that, they're all great guys who go out of their way to help everyone on the trail and in camp. Hi Fiza. ये है पस दरवाज़ा, door to the infamous wood and stone stairway to heaven. Generations of Shimshalis have labored to maintain this incredible pathway in this inhospitable place. It makes this steep ascent much more bearable, लेकिन फिर भी ज़ोर बहुत लगता है. और इस सारी मेहनत के बाद आप यहाँ पहुँचते हैं. उच्च दरवाज़ा, the door to Pamir Mountains. Please forgive my mistakes, because I don't speak the Wakhi language. But from what I've gathered, इन जगहों के नाम वखी ज़बान के इस ज़मीन से ताल्लुक़ का नतीजा हैं. They have words to describe the features of the landscape that we don't use in our languages because they're not relevant to our lives, but they are an everyday part in the lives of the Pamiri people. It's a beautiful language born out of a beautiful land. Well, this was supposed to be our final campsite for today. लेकिन यहाँ भी पानी नहीं है. I guess we'll just have to keep walking. 1-2 घंटे मज़ीद आगे यकीनन पानी होगा और वहीं हम रात गुजारेंगे अब. Finally, we have a home for the night, and we have water. काफ़ी लंबा हो गया आज का सफ़र, but noodles in camp can fix anything. I think it's time for a well-deserved rest. आप सब भी थक गए होंगे. Thanks for coming along. अब कल मिलते हैं. शब बखैर.